क्लास फिफ्थ एनवायरमेंटल स्टडीज। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 17 बोन्स के बारे में कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए बोन्स को पहले समझ लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। पहले इस पार्ट की मेन लाइन देख लेते हैं क्या क्या हम मेन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। बोन्स प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। There are many bones in our body which are joined together. Joints of bones help us in movement of the body. The bone structure of a body is called skeleton. Lungs, heart, and other internal organs are delicate organs which are protected by the structure of the bone. The bones of skull in our body is the strongest. Skull protects our brain. There are many types of bones in our body like skull bones of hand and legs, ribs, backbone, collarbone, joint bone, etc. And there are many bones in our body which are joined together. The place where two bones join together is called joint. Joints help us in movement of the body. Our body can stand erect only because of backbone. There are 206 bones in our body. They provide structure to our body. तो चलिए ये बोन्स देख लो और कैसे क्या है। ये पूरे बोन्स है हमारे पास जो दिखाई दे रहे हैं और हमारी बॉडी को बिल्कुल इरेक्ट यानी सीधी खड़ी करने के काम आता है ये, और मोशन में भी काम आते हैं। ऐसे यहाँ देखिए ये जो है आपके जॉइंट्स पर हैं, दिए हुए हैं, जॉइंट्स दिए हुए हैं जहाँ पर ये दिखा रखा है। जिस तरह से ये आपका दिया हुआ है दरवाजे में लगा रहता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये कोने वगैरह में लगा रहता है। यहाँ पर बॉल्स का भी कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर आपका बल्ब और ये अखरोट क्या है नारियल के बीच में फंसा करके रखा है और स्मूथली चल रहा है। ऐसे ही हमारे जॉइंट्स भी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। कैन यू सी द बोन्स? आंसर है वी कांट सी द बोन्स बट वी कैन फील इट बाय टचिंग आवर बॉडी। Try to bend our arms, fingers, and knees to these body parts. Bend. Prepare a list of the parts of our body that can bend. So answer is here: wrist, elbow, shoulder, neck, or ankle, etc. can bend. Where all can you find joints in our bodies? So feel it with your hands and list them. So answer is here. We have joints in fingers, wrist, knees, shoulder, neck, elbow, hips, knees of legs, etc. Had there been no bones in our body, what do you think would have happened? So answer: bones in our body form a frame that support and give shape to our body. The bones protect the internal organs of the body. If there would now be no bones in our body, we would not be able to stand erect. Bones protect our lungs, heart, etc. Thus, we can't imagine human life without bones. Name some creatures who have no bones. So answer है earthworm, crab, scorpion, spider, mosquito, cockroach, tortoise, housefly, leech have no bones. Do mosquito, houseflies, earthworms, etc. have bones? The answer is no. Mosquito, flies, earthworms, etc. have no bones. Bend your hand from near the elbow.
What happened? So answer है our hand bends easily from near the elbow। और ये elbow आपको दिखाया हुआ है, ये elbow में ऐसा joint लगा हुआ होता है। Stretch our hand and move it in the opposite direction। Tell what happened। So answer है hand cannot bend from the opposite direction from near the elbow। Carefully look at the door of your class. The door is fixed to a frame with the help of a hinge which helps the door to open in only one direction। Is the elbow joint like a hinge? So answer is yes. Elbow joint is like a hinge. Where all are the such joints present in our bodies? Right. So answer है these type of joints are present in knees of legs and finger of hands and legs. Like the bulb moves in the coconut shell, similarly the rounded head of the hand bone fits into a upper shaded cavity formed by the shoulder bone, which allow movement in all directions. This is called ball and socket joint। Like the bulb moves in the coconut shell, similarly, the rounded head of the hand bone fit into a opposite cavity formed by the shoulder bone, which allow movement in all directions। This is called ball and socket joint। ये आपको दिखाया हुआ है, ये नारियल का लिया हुआ है और ये ऊपर बल्ब दिखा रखा है। ये अंदर बड़े स्मूथली मूव कर रहा है, ऐसे ही अंदर बॉडी में भी होता है। हाउ इज blowing done in cricket? Do this action yourself। How does your hand move? So answer है our hand moves like a charkha or wheel in a circle। Where is your body do you find such joints? Try and find। So answer such joints are found in the wrist of hand। What is the structure of our body made up of? So answer है the structure of our body is made up of bones। What is ball and socket joints? So answer है the joint through which movement occurs from all directions is called ball and socket joints। For example, shoulder bones form such type of joint। What is the work of bones in our body? So answer है यहाँ पे the skeleton of our body is made up of small and large bones। These bones form a case of protect our body। Bones are very important in our body. They provide structure to our body। Bones help to move and bend the body parts। Bones protect our internal organs like lungs, hearts, brain, etc. Thus, bones are essential for our body because without them we can't stand properly। Explain with the help of an example what you know about hinge joint। So answer hinge joint is such type of joint in our bones which bends only from one side and not bends from other opposite side। For example, elbow joint, knee joint, and joints of fingers। What treatment would you give to a person with a fractured bone? So answer is first of all we should not allow the patient to do movements। The broken parts should not move but it should be tied with a wooden scale tightly।
then we should call a doctor and take medicines. Doctor will tie a plaster on the fractured bone for about 1 month and slowly the bones joins. Nowadays, for joining the bones, immediately they perform operations. यहाँ पर ये हैंड का स्ट्रक्चर आपको फुली दिखाया गया है और हर एक पार्ट्स के नेमिंग भी किए गए हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ऐसे ही जो पीछे आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया था बोन्स का पूरा स्केलेटन दिखाया गया था, वो स्केलेटन ये पूरा है, इसमें टोटल आपके नेमिंग कर दी गई, जैसे स्कूल है यहाँ पर, तो इस तरह के सारे नाम इसमें दे दिए गए हैं। अगर नाम याद करना चाहें तो अच्छी बात है, जो अगली क्लास में काम आएंगे। इसी के साथ मैं लेसन समाप्त कर रहा हूँ। नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।